अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंग्वेज सर्ट P1 सेल्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये पार्ट है हमारा 3 जो हम करने जा रहे हैं लिसनिंग का। अब लिसनिंग पार्ट 3 में क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे और ये B1 लेवल वालों के लिए याद रखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, लाइक करें, शेयर करें। कोई बात हो तो कमेंट कर लें, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर लिया करें। अभी यहाँ हम देखते हैं जी लैंग्वेज सर्ट का लिसनिंग का पार्ट 3। याद रखिए कि लैंग्वेज सर्ट की जितनी भी लिसनिंग है वो 2 दफ़ा आपको सुनाई जाती है, लेकिन फिर भी ये डिफ़िकल्ट है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं तकरीबन अब जो भी नई वीडियो आ रही है मैं बता रहा हूँ कि इसकी लिसनिंग पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लैंग्वेज सर्ट की लिसनिंग आपको मरवा देगी। ये 26 क्वेश्चन जो होते हैं ये मुश्किल हो जाते हैं आइट्स के 40 से, तो ये इसको बिल्कुल ईजी नहीं लेना। लिखा हुआ जी, यू विल हियर समवन टॉकिंग, कोई बंदा बात कर रहा होगा, आप सुनेंगे। यू विल हियर द पर्सन्स ट्वाइस, 2 दफा आप बंदे को सुनेंगे। कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ 1 to 3 वर्ड्स, 1 से 3 वर्ड्स का आंसर लिखना है। चौथा वर्ड लिखेंगे गलत हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम आपकी लिमिट 3 वर्ड्स हैं। 1 वर्ड में आंसर हो सकता है, 2 में हो सकता है, मैक्सिमम 3 में। स्कूल ओपन डे, स्कूल का जब स्कूल ओपन होता है उस दिन की बात हो रही है। क्वेश्चन है 7, ये पार्ट 3 है। लिखा हुआ है जी ऑफिशियल ओपनिंग टाइम, यहाँ हम टाइम बताएंगे कि उसका ऑफिशियल ओपनिंग टाइम क्या है। कॉस्ट ऑफ पार्किंग फॉर विजिटर्स, जो पार्किंग मिलती है स्कूलों में साइकिल खड़ी करने के लिए, मोटरसाइकिल गाड़ी, तो उसके कॉस्ट क्या है, कितने पैसे लेते हैं। व्हाट विजिटर्स नीड टिकट्स फॉर, ये टिकट्स विजिटर्स को क्यों जरूरी है, वहां कोई झूले लगे होंगे, कुछ और गेम्स वगैरह होंगी, उसके लिए टिकट्स होती हैं, या खाने पीने की हो सकती है। विच साइन टू फॉलो, कौन सा साइन फॉलो करना है। साइन लगे होते हैं ना, जो इधर जाना है, उधर जाना है, इस जगह नहीं जाना, ये सारे साइन कौन से हैं, ये करना है। हाउ लॉन्ग प्रिंसिपल्स बीन देयर, कितनी देर रहता है प्रिंसिपल वहां या कब से है वहां। वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट क्या है, बारिश होगी, धूप निकलेगी, किस तरह का वेदर होगा। हाउ टू कंटेक्ट जूल्स, ये जूल एक बंदे का नाम है, उसे कैसे कंटेक्ट करना है, या तो उसका फोन नंबर देंगे या बताएंगे कि ईमेल उसे करो, फोन करो, या उसे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, ये इस तरह लिखा आएगा। लेकिन वो लिसनिंग में आप सुनेंगे और यहाँ आप आंसर लिखेंगे। तो अभी कन्वर्सेशन 3 में चलाने लगा हूँ जी, इसके हम आंसर्स लिखते जाएंगे साथ साथ, और बाद में मैं फिर आंसर्स इसके आपको बताएंगे कि क्या क्या आंसर आएगा, या साथ हो सकता है कि कब बताता जाऊं, वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी। तो मैं बाद में आपको आंसर्स बता दूंगा इनके क्या है, तो बाद में फिर एक दफ़ा आपको मैं कन्वर्सेशन सुनाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। Listening, Part 3. You will hear someone talking. You will hear the person twice. Complete the information. Write short answers of 1 to 3 words. Good morning, everyone. I'm Jill Swan, the organizer. Thanks for offering to help with the visitors. It's going to be a busy day. Please be at the school gates by 10:45 at the latest. The official opening time is 11, but people will probably arrive early. There are plenty of car parking spaces outside the sports hall. If anyone offers to pay, please don't accept any money. Parking is, of course, free. Could you please give each visitor a ticket? They don't need it to get in, but they will need it for lunch at the school restaurant. Ask the visitors to go to the hall. If anyone doesn't know where that is, the easiest way to find it is to go up the steps into the old building and follow the sign with laboratory. No, sorry, I'll read that again. Library. Follow the sign with library on it and keep walking to the end of the corridor. The principal will be there in the restaurant to meet everyone in person. I know she's very keen to do this because she's leaving in December after 18. No, I didn't say 8. Oh, after 18 very successful years at the school. We've made arrangements for wet weather because last year was a disaster. It rained non-stop.
The outdoor displays will move into the sports hall if it rains, but the weather forecast, if you can believe it, is sunny. Let's hope they're right for once. Okay, let's get ready. If you need me for anything, you can look for me in my office, but you won't find me because I won't be there. No, seriously, use my mobile. I'll give you the number as soon as I can find it. जी, रिकॉर्डिंग ये आसान थी दूसरों से जो मैंने और देखी है, सुनी है। इसमें जो पहला ऑफिशियल टाइम है, वो ऑफिशियल टाइम से पहले एक और टाइम बताती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। मेरे हाथ से 10:45 10:40 के करीब बताती है, मुझे भी याद नहीं रहा। तो वो बता देती है, कहती है कि आ जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल टाइम 11 है। तो इसका जो आएगा वो आएगा 11 o'clock। फिर कॉस्ट ऑफ पार्किंग फॉर विजिटर्स, वो कहती है फ्री है, ये कुछ नहीं है। और यहाँ इसका आएगा इट्स फ्री, ठीक है, या नथिंग। और तीसरा जी, व्हाट विजिटर्स नीड टिकट्स फॉर, किसके लिए चाहिए, वो पहले कहती है जी टिकट आपको चाहिए, एंट्री तो फ्री है, एंट्री का बताती है। और फिर साथ कहती है जी आपको चाहिए लंच के लिए टिकट चाहिए। विच साइन टू फॉलो, लाइब्रेरी। पहले इसका भी इसने कोई काम किया खराब, यहाँ लेबॉर्ट्री इसने बोला था, तो लेबॉर्ट्री की जगह है लाइब्रेरी। तो ये आपको गलत जान की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो बंदा सिर्फ सुन के अल्फाज और लिखने की कोशिश करता है, लिसनिंग उसकी ठीक नहीं होती, तो उस जैसे बंदे के लिए ये होता है कि ये जानबूझ के गलत बताते हैं। हाउ लॉन्ग प्रिंसिपल्स बीन देयर, कितना अरसा हो गया। यहाँ भी उसने एक दफ़ा 8 साल भी कहा है कि मैंने 8 साल तो नहीं बोला। तो जिसको इंग्लिश, जिसकी लिसनिंग ठीक नहीं, वो 8 साल लिख देगा, लेकिन उसने 18 साल हो गया उस औरत को यहाँ, और वो दिसंबर में जा रही है आई थिंक। वेदर फोरकास्ट, यहाँ भी उसने डंडी मारी है, कहा जी वेट वेदर और बाद में सारी बातें, और फिर कहती है कि आप बिलीव करेंगे कि सनी है, यानी कि धूप भी निकलेगी, तो ये होगा सनी। और प्रिंसिपल वाला है 18 ईयर्स, वेदर फोरकास्ट है सनी। और हाउ टू कॉन्टेक्ट जूल्स, यहाँ जूल्स का नाम तो नहीं आया, ये खुद जूल है जो बात कर रही थी। तो आई थिंक शुरू में शायद इसने अपना नाम बताया हो, लेकिन मुझे पता कोई नहीं, मुझे याद नहीं। तो यहाँ आएगा मोबाइल फ़ोन, कि इसको उस मोबाइल फ़ोन पे आपने कंटेक्ट करना है। तो ये आंसर्स हैं, दोबारा सुन लीजिए। पहला है 11 o'clock, दूसरा फ्री है, तीसरा है टिकट्स फॉर लंच, ठीक है, सिर्फ लंच लिखेंगे आप। विच साइन टू फॉलो, यहाँ आप लाइब्रेरी लिखेंगे। लाइब्रेरी ये आमतौर पर बोला जाता है, लाइब्रेरी भी आप लिख लें तब भी ठीक है। हाउ लॉन्ग प्रिंसिपल्स बीन देयर, 18 ईयर्स यहाँ लिखेंगे। वेदर फोरकास्ट यहाँ लिखेंगे सनी। हाउ टू कंटेक्ट जूल, यहाँ आप लिखेंगे मोबाइल फ़ोन। अब मैं दोबारा से इस रिकॉर्डिंग को चलाने लगा हूँ, आप गौर से सुन लीजिएगा, और मुझे भी पता चल जाएगा कि उसने शुरू में जूल अपना बोला है या नहीं, नाम बताया उसने या नहीं। चलो इसको दोबारा सुनते हैं। Good morning, everyone. I'm Jill Swan, the organizer. बताया। Thanks for offering to help with the visitors. It's going to be a busy day. Please be at the school gates by 10:45 at the latest. The official opening time is 11, but people will probably arrive early. There are plenty of car parking spaces outside the sports hall. If anyone offers to pay, please don't accept any money. Parking is, of course, free. Could you please give each visitor a ticket? They don't need it to get in, but they will need it for lunch at the school restaurant. Ask the visitors to go to the hall. If anyone doesn't know where that is, the easiest way to find it is to go up the steps into the old building and follow the sign with laboratory. No, sorry, I'll read that again. Library. Follow the sign with library on it and keep walking to the end of the corridor. The principal will be there in the restaurant to meet everyone in person. I know she's very keen to do this because she's leaving in December after 18. No, I didn't say 8. Oh, after 18 very successful years at the school. We've made arrangements for wet weather because last year was a disaster. It rained non-stop. The outdoor displays will move into the sports hall if it rains, but the weather forecast, if you can believe it, is sunny. Let's hope they're right for once. Okay, let's get ready.
If you need me for anything, you can look for me in my office, but you won't find me because I won't be there. No, seriously, use my mobile. I'll give you the number as soon as I can find it. जी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो किसी रिलेटेड भी, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं अगर देखूंगा, मुनासिब समझूंगा उस पर वीडियो बनाना या वैसे जवाब देना, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब उसका दूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।